Nanoparticles in enzyme biosensors. बायोसेंसर्स की फैब्रिकेशंस के लिए मुख्तलिफ किस्म के नए रिसर्च टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इन टूल्स में नैनो पार्टिकल्स भी शामिल हैं. नैनो पार्टिकल्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स हैविंग साइज इन द रेंज ऑफ नैनोमीटर्स. There are two types of nanoparticles which are used in biosensor. One is the organic nanoparticle and other is the inorganic nanoparticles. इन nanoparticles की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं. इन nanoparticles को बायोसेंसर में इस्तेमाल करने के लिए इनकी सरफेस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है. These modifications are of two types: physical methods for the modification of surface of the nanoparticles and the chemical methods for the modifications of the surface of the nanoparticles. ये nanoparticles enzyme biosensor में हमारी बहुत हेल्प करते हैं. There are 4 different functions which are related to these nanoparticles. पहला फंक्शन कि ये एंजाइम की या बायोलॉजिकल रिकग्निशन एलिमेंट की इमोबिलाइजेशन में हेल्पफुल साबित होते हैं. दूसरा, they are very useful in the catalysis of electrochemical reaction. Number 3 is they increase the electron transfer from the enzyme protein to the electrode, and they are also very useful tool in the labeling of biomolecules. Now, surface modifications. For biological molecules, we need to use polar surface modification. इसकी वजह हमारे तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पोलर हैं. दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप. वंस वी मॉडिफाई आवर नैनो पार्टिकल विद ए पोलर सरफेस मॉडिफिकेशन, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर आवर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू अटैच विद द नैनो पार्टिकल्स, एंड इट विल हेल्प टू इंक्रीज इट्स solubility and prevent its from aggregation. As per requirement, nanoparticles could be modified or functionalized as by using electrostatic adsorption, hydrophobic ligand or hydrophilic ligands. Electrostatic adsorption is a very simple process. There are 2 types of electrostatic absorption. First is the simple type of electrostatic absorption and is widely used. इस अप्रोच को कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स या कार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें amorphous कार्बन, कार्बन ब्लैक और कार्बन शामिल हैं. इसके अलावा दूसरी टाइप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक एब्जॉर्प्शन. इसके लिए हमें 2 कंडीशंस चाहिए होती हैं. वी नीड अ मेटल नैनो पार्टिकल एंड अ कंट्रोल्ड pH सिस्टम. दिस टेक्निक इज very suitable to provide small nanoparticles, and the range of the nanoparticles which are produced by using the strong electrostatic absorption technique has the size around 1 to 2 nanometers. Now, the hydrophilic ligand. Surface modification के लिए मुख्तलिफ hydrophilic ligands को nanoparticle से attach किया जा सकता है. इन nanoparticles में इस फिगर में आप एक gold nanoparticle को देख सकते हैं, जिसको मुख्तलिफ hydrophilic ligands के साथ अटैच किया गया है. इन हाइड्रोफिलिक लिगेंड्स में मरकैप्टोएसिटिक एसिड, मरकैप्टोप्रोपेनोइक एसिड, मरकैप्टोसक्सिनिक एसिड, बिस-सल्फोनेटेड ट्राइफिनाइलफॉस्फीन, polyethylene glycol with SH group, and a short peptide containing the sequence of CALNN. इन तमाम ग्रुप्स में सल्फर शामिल है. There is another approach which is used for the surface modification of nanostructures. In this approach, a long alkyl tail and a hydrophilic ligand head is used. This is a very successful approach, and this approach is one-step approach. इस approach के जरिए different chelating agent, bioactive molecules such as proteins could be attached. Lipids could also be attached to the nanoparticles by using this approach. The lipid derivatives such as cholesterol and different fatty acids could be attached. PEG derivatives such as polyethylene glycol derivatives of proteins could also be attached to these nanoparticles. So this is the most successful approach. In one step we can get a nanoparticle modified to which we can attach a number of molecules or different types of molecules. Now, in summary, nanoparticles are used in biosensor for their improvement and due to their unique properties. For the specific purpose, the surface modifications of the nanoparticles is required. Among others,
the one-step modification using long alkyl tail and hydrophilic head is most successful for the multiple functionality of the nanoparticles. So the modification of nanoparticles could be done as per requirement.